Hey, good morning. One bright winter morning that it is. Warm winter morning because it's sunny here. And how are you all doing? Thank you for joining in wherever you're joining from, even if it's LinkedIn or YouTube. Thank you so much. I'm Nidhi, proud mother of a young man, creator of my own life, a lifelong seeker, an omnivore, a textile professional turned communication skills trainer, also an emotional clarity coach, and an author. And today I'm coming to you with the the fourth live episode, where I'm discussing sales communication skills. In my previous three episodes of my live sessions, I have spoken to you about six sales communication skills, and today I'm going to speak to you about another two, and in total we have 10. So next live session is going to be my last of this series only, for sales communication, right? So the ones that I have already spoken to you about, the sales communication skills that I have spoken to you about, are active listening. We spoke about body language. We spoke about adaptability. We spoke about tone, the tone in which you're conveying that message. Last week, we spoke about empathy and clarity, being very specific and being clear in whatever you are communicating. And today, we're going to talk about another two, which are honesty and humility. Now, you might feel, ये कैसी communication skills हैं? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है. But these are communication skills, and along with the technical knowledge that you have, you need to know about how to convey it. और जैसे हम कन्वे करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, and that is very 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 important, right? Okay, so do keep writing if you're there, and if you're understanding whatever I am saying. And if you have any questions, you can write, and I shall definitely take it up as and how it comes in front of me. It's usually a one way interaction here on LinkedIn. I cannot see you, I can only see you through your comments, right? Okay, so let's start. But I want to share a particular scenario with you today. So I've been banking with a particular bank. I'm not naming anybody here, but for decades I have been a customer of that particular bank, and I have purchased a couple of policies also for that through that bank. Now, a few years ago, somebody from the insurance side of the bank, he called me, and he told me he's calling from the bank and all that blah 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 stuff, and he said that he wants to come over and he wants to discuss some investments. And yeah, मुझे करनी थी उस वक्त. So I said, yeah, आ जाइए. I thought कि यार चल ठीक है, घर पे बैठे बैठे if somebody is calling and he's coming here and he's helping me, then why not? Let's do it. Let's understand what he's saying. So this person came over. He told me everything, and he convinced me. I got convinced, and I bought a policy, right? And I invested something in it. Now, I asked him a couple of questions at that point in time. मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पर मेरे पास आए हो तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है? मतलब what is it like? You know, is there anything hidden that I need to know? He said, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हमें थोड़ा सा हमारे टारगेट्स होते हैं, एंड हमें छोटा सा एक परसेंटेज, एक कमीशन मिलता है, एंड ऑल दैट स्टफ, which was normal, which seemed very normal. चलो कोई बात नहीं, खरीद लिया. Now, when after a year I had to pay my next premium, I tried connecting with the person. I called him. Even through the year I had tried calling him, नहीं हो पाया, but फिर मैं काम में busy हो गई. So I tried calling him, and I tried connecting with him. I had some queries. मुझे कुछ setup करना था उसी policy के against, कुछ information चाहिए था. That person was not traceable at all. वो मेरी phone ही नहीं उठा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था. And then I went to my bank and I went to my relationship manager. मैंने उनको बताया, and उन्होंने जो मुझे बताया, he was like,
why did you have to buy a policy from a third party agent, right? वो एजेंट था, वो एक थर्ड पार्टी था, वो बैंक का नहीं था. सो मुझे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं थी, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द डे I realized and I was told that a good percentage of whatever I earn through that investment was going to that person. एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं तो लिखा हुआ था जो मैंने नहीं पढ़ा. एंड some setting, um, so I lost, once that whole investment was matured, I lost a good amount of money, which went to that agent, right? मतलब I think easily 2-2.5 लाख मेरा निकल गया था सिर्फ paying the commission of that person, right? Now, can you tell me, what do you think I lost? What do you think I might have lost in this whole transaction? इसमें क्या खोया मैंने, या क्या खोया इस पूरी ट्रांजैक्शन में? I lost trust and I lost credibility in that person, right? And I lost credibility in those, in if somebody approaches me through that third party or through the insurance side of it directly, I have lost that trust, राइट? वो मुझे चाहे जितना भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं नहीं, वो ट्रस्ट मेरा रीबिल्ड नहीं हो पाता है, because I was not told and I had a little bitter experience. Now that person didn't tell me a couple of things at that point in time, right? I'm a customer of my bank, and whatever I need today, I only go through my bank. I don't go through any third party with them because of all those um, terms and conditions जिसमें मैंने credibility खो दी उस इंसान ने अपनी, right? Why am I talking to you about all of this? Now, इस पूरे किस्से को आपको बताने का सिर्फ एक रीजन था. This person who came to me, he was a salesperson. Okay, he was selling his product, he was selling, लेकिन उसमें से भी उसने मुझे बहुत चीज़ें नहीं बताई थी, राइट? उसका क्या हिस्सा था, उसका क्या कनेक्शन था इसमें, उसको क्या मिलने वाला था. आई डिडंट नो नीड टू नो इन मॉनेटरी टर्म्स एग्जैक्टली कितना कितना, लेकिन अगर वो मुझे कुछ चीज़ें और डिक्लेयर कर देता जो मुझे बाद में पता चली, राइट? ही डिड नॉट डू दैट, and that is a problem. That is the problem with sales. Many people do not realize that they are just trying to make that one sale. उसके बाद उस इंसान ने कोई connection नहीं रखा मेरे साथ, okay? And that is the problem कि आज भी जब हम बात करते हैं सेल्स पर्सन की, या ओ आई एम इन सेल्स, या किसी के बारे में सुनते हैं, आई वांट टू आस्क यू, व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग कम्स इन योर माइंड? आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चलता है जब आप सुनते हो कि कोई सेल्स में है? ओके, सच जवाब दीजिएगा. इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट. इफ यू वांट टू जस्ट आंसर टू योरसेल्फ, आंसर टू योरसेल्फ. एंड being very honest, most of the people, if you ask this question, most of the people, sales के नाम पर हम लोगों के नेगेटिव वर्ड ज़्यादा आते हैं. ओ दैट पर्सन माइट बी अ लायर, झूठ बोलेगा, ओवर सेल कर देगा, अरे झूठा है, बहुत ही करप्ट इंसान है, बहुत ही चालाक है, दैट्स हाउ वी, look at the words that we use for any salesperson. Why are we doing it? Because some unprofessional people who've been into sales, have been practicing sales like this, have been communicating sales in a manner which has been very dishonest. And that's the reason there are very few honest salespeople in the whole industry, in this world. Right? If you agree with me, right? Write in the chat box if you agree with me. What do you think about it? Because honesty can actually harm sales. That's reality, right? अगर आप सच बोलोगे तो आपको लगता है कि it's going to harm my sales, so might as well मैं कुछ बोलूँ ही ना. Okay? झूठ बोलता हूँ ना, थोड़ा जल्दी बिक जाएगा सामान. Right? And that's what I want to talk to you about, because these unprofessional people who do not believe in honesty are the ones who are only making a one-time transaction and they are not making a customer. And that is my first skill that I have for you today: honesty.
Honesty is a skill. Yes, many times you might say सब कुछ सच नहीं बता सकते हैं, कुछ तो छुपाना पड़ेगा. ओके, अग्रीड. लेकिन उस छुपाने से क्या होगा? आप ऐसी चीज बेच ही क्यों रहे हो जिसमें आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज अपने ही लेवल पे करना पड़ रहा है? आपको कुछ छुपाना पड़ रहा है. माइट एज वेल उन वीकनेसेस पे थोड़ा सा काम करके उनको बेटर किया जा सकता है, राइट? Okay, so it's very, very important. Now, why do people lie? Why are salespeople actually lying? See, first thing is they don't know the product too well. झूठ आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको प्रोडक्ट नहीं पता है, उसके बारे में सारा डिटेल्स नहीं पता है. सेकेंडली, यह तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता है. आपको पता है दैट प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, बट यू हैव टू सेल इट बिकॉज यू हैव टू फुलफिल योर टारगेट्स. सो यू आर डूइंग going any which way just to sell it, right? Any of these, you either know the product too well or you do not know your products too well. Another thing, you want to avoid conflict. आपको डर लगता है कि यार अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो शायद कोई अगर सामने से ऑब्जेक्शन आया, कोई क्वेश्चन आया, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ तो मैं उसको डील नहीं कर पाऊँ. आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ टेंशन. नहीं चाहिए बाबा. माइट एज वेल एक दो झूठ बोल के अगर कवर अप होता है तो ठीक है ना, करते हैं ना. हु क्या है, सब लोग भी तो ऐसा ही करते हैं. एंड दिस इज वन थिंग वेरी डेंजरस. सब लोग तो करते हैं तो आप भी उसका हिस्सा बन जाते हो. द थर्ड थिंग इज you lie. Salespeople lie because they're only concerned about fast money. एंड दैट्स व्हाट दे वांट. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. मुझे सिर्फ इसको बेचना है, मुझे अपने पैसे से मतलब है, मुझे और कोई मतलब नहीं है. एंड देन दे फॉरगेट दैट इन द लॉन्ग रन, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको आज तो शायद पैसा मिल जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको रिपीट नहीं आएगा बिजनेस. आपको उन्हीं लोगों से वापस काम नहीं आने वाला है, राइट? यू हैव टू गो लॉन्ग in this journey. You have to go far in this journey. You can't be just doing it very momentary, right? इसलिए honesty बहुत जरूरी है. And see, how can you maintain honesty? First of all, you need to know your value system, right? अपना थोड़ा ethical game खेलिए ना. क्यों झूठ बोल के चालाकी करके आपको आगे बढ़ना है? One is very internal. The reason why you need to be honest is it is internal. It doesn't need to harm anybody as well as you. Now, how can you be more honest is by asking your client to help you. जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ आप उनकी हेल्प मांगिए. ना हेल्प कैसे मांग सकते हो? आस्क देम एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. यू नीड टू नो वेरी क्लियरली कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि क्या चाहिए, ओनली देन कैन यू एक्चुअली provide them with the right things. And that's जब आपको वो पता चल जाएगा, उसके बाद you don't need to actually lie. आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको पता है अब, right? So ask them. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है जो आपका क्लाइंट बोल रहा है, if they've said something to you, ask them to clarify that point. उनसे डिटेल में डिग करिए, उनको खोदिए, उनको कुरेदिए, समझिए उनको क्या जरूरत है. Because that can only help you give them the right answers. आप आधा समझ के झूठा आंसर दे दो, उनको झूठी सर्विसेज दे दो. Does that even make sense? Just because you want something, right? हो सकता है अगर आपका सच बोलकर वो बिजनेस उस वक्त नहीं आता है, 2 महीने बाद आता है आपके पास, you're getting it. Goodwill is very important than just making a one-time transaction. Okay, be very, very thoughtful about this. Now, whenever you are sharing information about your product or your service, please give full information. Please give full information to your client. Tell them, make them feel that this is my vision for you. This is what I expect for you. आपके लिए मैं ये चाहता हूं, इसलिए आप मुझे सब कुछ बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए चाहता हूं कि आपको सब कुछ वो मिले जो आप ढूंढ रहे हो.
ओके, आई विल हेल्प यू आउट, आई एम अ पार्ट ऑफ योर टीम, हम दोनों टीम है, प्लीज लेट मी अंडरस्टैंड सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट एंड आई कैन प्रोवाइड यू विद द बेस्ट सोल्यूशन, राइट? सो what will happen, it's going to build trust and credibility. अगर एज अ कस्टमर मुझे दिख रहा है कि जो बेच रहा है सामने वो मेरे में इंटरेस्टेड है भाई, वो दैट पर्सन इज ट्राइंग टू हेल्प मी, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट दैट पर्सन मोर. अगर उसमें थोड़ा वक्त लगता है, you need to pursue your client, it's okay, go ahead, do that. It is going to be helpful. झूठ बोलने से definitely better है. So adapt, try to adopt honesty थोड़ा सा. So how can you do that? Show your good intent towards your client. Okay, अपना आपका intention उनके लिए क्या है, आप इस पे उनसे बात करिए. अभी upfront if you do not know something. अगर आपके सामने कोई ऐसा, आपको एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं होना, यू कांट नो एवरीथिंग, राइट? अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सो इट्स ओके, बी अपफ्रंट. आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी बट आई कैन गेट बैक टू यू, राइट? कैन यू गिव मी सम टाइम, आस्क फॉर टाइम एंड गेट बैक विद दैट क्वेश्चन, राइट? गेट बैक विद दैट आंसर. उस इंफॉर्मेशन के साथ आप वापस आइए, बट बी ऑनेस्ट अबाउट इट. उस उस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को आप एक कवर अप करो एक झूठ के साथ, दैट वुड नॉट हेल्प, राइट? और अगर आपको बिफोर अ मीटिंग यू नो दैट देर इज सर्टन इंफॉर्मेशन, सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड, टेक दैट टाइम फॉर प्रेपरेशन. जो वक्त है मीटिंग का, मीटिंग से पहले जो आपको वक्त मिला है, एक दो दिन, वॉट एवर इट इज, इफ दैट इज, प्रिपेयर एवरीथिंग ना. अजम्पशंस के बेसिस पर अपने ऑब्जेक्शंस को समझिए कि क्या आ सकता है सामने से, and basis that objection have everything ready. Okay, all the possibilities that you can. इसको बोलते हैं preparation, by the way. So preparation prep करके थोड़ा सा जाएंगे, आपके पास आधे से ज्यादा आंसर्स होंगे. अगर नहीं है तो बोलिए नहीं है. Don't talk about what you can't offer. Okay, I have been a customer to a lot many. आप भी हो, I'm sure. As a normal general customer, market में जाते हैं या हमारे पास sales calls आती है फोन पर, तो दिन में 20 आ जाती है हम सब लोगों के. People are selling what you don't want, right? और what they can't offer. वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो सब झूठ था, सब फेक था. So don't talk about what you can't offer. मतलब अभी तो ऑफर कर दिया, बाद का बाद में देखेंगे, एक बार तू सेल ले ले भाई, उसके बाद देखा जाएगा, फिर हम हैंडल कर लेंगे. ऐसे नहीं होता है, राइट? सेल्स इज नॉट अ डिसऑनेस्ट गेम. नहीं है, नहीं है, राइट? If you, what you can do about it, can you create it, can you build on it, that is something that you can be honest about. But if you can't offer something, be open about it. What else can you offer is something that you can put forward. हो सकता है वो चीज आप ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी एक काउंटर ऑफर कर सकते हो. सो आप काउंटर ऑफर को रखिए ना सामने, जो चीज आप कर सकते हैं, right? So be honest about that. If there is any hidden information, please talk about it. Like I told you about my experience that I had, and that was a little that did hit me a little, because I had invested for a reason, and when I had to take out that money, a good amount of that money, and the profit that I had by that investment was taken away by that agent. So yeah, so if you have any hidden information, तो वो जो terms and condition, वो जल्दी terms and condition apply, वो जो ad के नीचे बोलते हैं ना, एक्चुअली उसमें बहुत चीजें होती हैं. बट इफ यूर अ सेल्स पर्सन, अगर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन है, प्लीज बता दीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेल इट टू द पर्सन दैट यू आर सेलिंग समथिंग टू. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, right? Now, how, another thing, how you can build on honesty and how can you be more honest and come across as more honest is you can, अगर पास्ट में कोई ऐसी सेल हुई है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई टेस्टिमनी शेयर करने की जरूरत है किसी क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट के साथ, इफ दे वांट टू हैव जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, अगर आप कनेक्ट करा सकते हो तो करा लो, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री इट इज, व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इट इज. इफ यू फील यू कैन कनेक्ट इट टू अ पास्ट success story of yours, do it, because that also creates a lot of honesty कि आप मुझसे ये चीज मांग रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो
You can have a look here, or you can connect with this person, you can talk with this person, or however it is, right? So इसीलिए आज की डेट में लोग वीडियो टेस्टिमोनियल्स बहुत देते हैं, बिकॉज रिटन टेस्टिमोनियल का क्या हो जाता है ना कि कभी कभी कोई भी लिख देता है, इतने फेक होने लग गए हैं आजकल. सो वीडियो टेस्टिमोनियल्स का ये भी एक बहुत बड़ा फायदा कि इंसान है सामने बैठ के बोल रहा है. सो दैट शोज बिल्ड्स मोर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट कि हाँ एक असली इंसान है, सिर्फ एक नाम नहीं है जिसके मतलब आपने शायद कुछ लिख दिया हो. Right? So find your way, and another benefit of speaking the truth, आपको बताती हूँ, बहुत आसान है ये वाला बेनिफिट, सबसे बेस्ट है. बिकॉज अगर आप सच बोल रहे हो ना, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है अरे मैंने पिछली बार कौन सा झूठ फेंका था, मैंने क्या फेंका था भाई, याद नहीं आ रहा है, इसके साथ फेंका था या दूसरे वाले को झूठ बोला था, इसको मैंने क्या बोला था. सो यू डोंट हैव टू थिंक ना, इतना वरी नहीं करना है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, एवरीथिंग इज ट्रूथ. Right? So, one best benefit of speaking the truth is you do not have to worry about what did you lie about last time. कोई कवर अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सच बोल रहे हो जैसे आप हो, जो है आपके पास, जो है सच वो आप बता रहे हो. Right? So try being honest, and if you have any experiences of honesty or dishonesty of in sales in your life, or something that you have done by, or you have gained by being honest, do write in the chat box. I would love to know, because I also keep learning from you, from each one of you, and from people around me. So yes. Now coming to my second skill that I want to share today. बहुत ज़रूरी है ये वाली स्किल, बहुत ज़रूरी है ये वाली स्किल. ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस. व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? मतलब क्या है इसका? सो अगर हम एक डिक्शनरी की भाषा में बोले, इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द डिक्शनरी, ह्यूमिलिटी इज अ मॉडेस्ट व्यू ऑफ योर ओन इम्पोर्टेंस. बेसिकली इट्स अ मॉडेस्टी, जिसको बोलते हैं ना कि आपको अपना इम्पोर्टेंस पता है लेकिन आप मॉडेस्ट हो उस बारे में. राइट? सो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि अपने बारे में अरे नहीं नहीं नहीं, कम बोलना, कम सोचना, नहीं 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 सर ऐसे. राइट? ऐसा भी लगता है बहुतों को, लेकिन इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज लेस. It's about thinking less about yourself. Okay, I'm repeating myself by the way again. It's not about thinking of yourself as less, but it's about thinking less about yourself. आप अपने आप को कम नहीं समझ रहे हो, पर अपने बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहे हो. That's the only difference. आपको पता है आप की कैपेबिलिटीज, लेकिन आप उसको कोई शो ऑफ करने में नहीं लगे हुए हो. यू जस्ट हम्बल एंड मॉडेस्ट अबाउट इट, दैट्स इट. यू नो हु व्हाट यू आर एंड हु यू आर. उसका ईगो नहीं, आई मी माई सेल्फ नहीं बन रहा है. दैट इज ह्यूमिलिटी. यू आर एक्सेप्टिंग, यस यू आर, बट थैंक यू. राइट? पर उसमें आप इतना वक्त नहीं बिताना चाहते. नाउ हाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सो ह्यूमिलिटी क्या नहीं करता, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट. If sorry, humility is not, what is not humility in sales? Humility is not agreeing with your client every time. हाँ जी, या आई नो जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो. नो, दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी. Okay, if that you think is humility, no, it is not begging for business. किसी एक इंसान के पीछे पड़े हुए हो, दे दो प्लीज सर, दे दो, ले लो ना सर प्लीज, ले लो ले लो ले लो. अरे नो, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल ऑफ दैट. इट इज नॉट begging for business. That is not humility. Another thing that is not humility is giving too much of discount or discounting somebody a lot. No, that is not humility. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमिलिटी. इस सबको आप ह्यूमिलिटी में नहीं डाल सकते हो. ह्यूमिलिटी इज बीइंग असर्टिव, नॉट बीइंग रूड. ह्यूमिलिटी इज बीइंग कॉन्फिडेंट एंड नॉट बीइंग एरोगेंट. ह्यूमिलिटी इज बीइंग rigorous, giving your 100 to 100% in your work, but not being ruthless. Okay, giving the best but not being ruthless in the way you do it. Right? So अगर आपको ह्यूमिलिटी समझ में आई, इट्स अबाउट लिसनिंग टू योर क्लाइंट. इट्स अबाउट लिसनिंग कि उनको क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, एंड
When you listen to them, you're able to sit with them and help them find the right fit for them. उनके right fit, right services, right product, right connect करना, वो आप कर सकते हो if you are being, if you are humble. Because then it's not about just you. आप वहां पर as equals बैठे हुए हो. आप इस माइंडसेट के साथ नहीं गए कि कस्टमर ही भगवान है तो मैं जा रहा हूं, मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा. आप सिर्फ इस माइंडसेट के साथ नहीं गए, आई नो इट ऑल बाबा, मेरे को सब पता है अपने काम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में. ओके okay? ये दोनों ही एटीट्यूड गलत हैं. दे डोंट हेल्प इन ह्यूमिलिटी. ओके, सो ह्यूमिलिटी इज ऑल अबाउट लिसनिंग. और अगर आप ध्यान से लिसन कर रहे हो, अगर आपने मेरे पास्ट वीडियोस भी इस पार्ट के देखे हैं, आज पार्ट 4 है, इफ यू हैव seen my other videos, active listening is also one of the major communication skills. और ये सारी skills interrelated हैं, आपस में intermingled हैं. कोई आप ऐसा नहीं है कि आपने बस एक के साथ काम किया तो आपका हो जाएगा. आपको सबको थोड़ा 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 थोड़ा, यू विल हैव टू अप्लाई एंड यूज देम, राइट? सो इट्स, humility is about being honest with your product, with your service. And even if it means you have to talk one or two, you to talk about one or two shortcomings. अगर आपकी प्रोडक्ट के 10 स्ट्रेंथ्स हैं और अगर उसमें से दो, एक या दो शॉर्टकमिंग्स हैं, ह्यूमिलिटी इज टॉकिंग अबाउट दो शॉर्टकमिंग्स, बीइंग ऑनेस्ट. Are you seeing how honesty and humility are intermingled? Are you seeing how active listening and humility are intermingled? Right? सब कुछ आपस में मिला हुआ है. Okay, so it's very important to be okay with what you have, to feel about it, to share about its shortcomings also. Because see, nobody's perfect. ना मैं हूँ, ना आप हो, ना even the best salesperson in on this planet will not be a perfect person. कोई नहीं है. सबके अपने skills हैं, सबके अपने strategies हैं. Even the best persons are very fierce when they go in for a sales pitch. It's called passion, right? But there's a very thin line between being desperate and being rigorous and passionate. You don't have to come across as desperate. You just have to come across as somebody who's passionate and rigorous about it. Right? Humility is about treating your clients and yourself as equals. Okay? It's about being a good listener. Now, I've also seen people when they walk in, sometimes salespeople come in and they go in and they're talking, and the other person, the client is sitting and the person is standing in front of them and talking, which I personally find very inhuman because we all are equals, right? So I always say that in my sales trainings, whenever communication sales trainings, I always tell people that you need to be assertive. You have to respect yourself first before anybody else does that for you. Because when you walk into a room for making sales or trying to crack a deal where you do not respect yourself, nobody else will. And that is why half of it is lost there itself, because आपने तो अपने आप को ही respect नहीं किया. We all are equals, right? If I walk in and somebody tells me to just keep standing and talking, I'm definitely going to say, I think let's sit and talk, right? Equal पे बात करते हैं. That's many people may agree with me, many people may not agree with me. Okay, but I strongly believe we are equals. I, as a salesperson, am doing my job. मेरा काम आपसे काम के छोटा तो है नहीं, right? So let's talk. मैं आपके काम की, आपकी ज़रूरत की सर्विस एंड प्रोडक्ट आपके साथ बात करने आई हूँ, and that's what I want to talk to you about. Just 10 minutes of yours. So let's treat each other as equals. That's called humility from both ends, right? So for being a good salesperson, these two skills of honesty and humility
Believe me, if you merge them with the other six that I had shared earlier, you are practice them, and believe me, no, there's no stopping you if you know this. Believe me. बिकॉज ज़िंदगी में अगर कुछ भी आप बेच पाए या आप कुछ भी कनेक्शन बना पाए वो सिर्फ एक ह्यूमन लेवल पे हो पाएगा उसके बियॉन्ड वो आगे नहीं बढ़ पाएगा सो बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इट right and do right how do you manage and how do you go ahead with this these two skills of that I had shared today, humility and honesty. आपके क्या experiences हैं and if today's video, this episode made some sense about these two skills because they are very, very important. Yeah, and on that note, I'm going to sign off. But if you want to watch my previous videos for this series of sales communication, the links are there in the description. Another thing, if you have any questions, you can directly message me. If you want, you can always join my group, my Facebook group. Again, the link is given with the description of the video. And next week, next live when I come, I'm going to it's going to be the fifth episode where I'm going to talk about the last two skills, communication skills for sales. So, sales communication skills, the ninth and the 10th one, and that's persistence and silence. Oh my God, silence. Now, some of you might think silence and communication. Wait and watch. That's a very interesting one, by the way, and because that can be a game changer. Okay, so thank you very much for your time to watch the live, watch the video. Thank you so much. I could notice a few numbers who had joined in. Of course, no interaction in the chat, but it's perfectly fine. And thank you for joining in. Thank you for watching this. Thank you very much. Have a wonderful week ahead and enjoy. And see you next week. Bye bye. Take good care of yourself.